Yes, students. The next is Holozoic mode of nutrition. We are discussing it step by step. So there are generally 5 steps in Holozoic mode of nutrition: ingestion, digestion, absorption, assimilation, and the last one is egestion. Okay, we are discussing it step by step. So first is ingestion. In Holozoic mode of nutrition, organisms take complex food. The food is taken inside the body in the complex form. So first is ingestion. Organism intake the food in complex form, and then what happens by the food? It get digested inside the body. So the digestion is intracellular. Next is digestion. In this conversion of complex food is broken down into simpler forms by the enzymes. What happens? Complex food need to be converted first into simpler forms, because complex form as it is body के द्वारा यूज नहीं किया जा सकता है, absorb नहीं किया जा सकता है. It first need to be converted into some simpler substances that are easily absorbed by the body and energy can be derived from it. Got it? So what do you mean by enzymes here? These helps in digestion. They convert the complex food into simple substances, right? So enzymes are biocatalyst, biological catalyst. What do you mean by catalyst? Catalyst is a substance, students, which generally increase the rate of reaction. जो भी रिएक्शन बॉडी में होता है उसको फास्ट करा देता है, विदाउट इट सेल्फ बींग यूज. खुद यूज नहीं होता है. ओके, it only makes the reaction faster. So there are certain kind of enzymes. जिस भी सब्सटेंस के पीछे एज आ जाए, ASE, अमाइलेज, लाइक सेलिवरी अमाइलेज. ओके, सो ये क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं. नेक्स्ट इज फूड इज गट डाइजेस्टेड. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज एब्जॉर्प्शन. In absorption, what happens? The simpler food is now taken inside the blood. Why blood? Because हमें कोई भी चीज अगर पूरी बॉडी में सर्कुलेट कराना होता है तो फर्स्ट हम क्या कर देते हैं? उसको ब्लड में मिक्स कर देते हैं. ब्लड डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी तक जा करके उस चीज को ट्रांसपोर्ट करता है. सो नेक्स्ट इज पैसेज ऑफ सिंपलर फूड इनटू द ब्लड और लिम्फ. लिम्फ इधर क्या है? लिम्फ इज सिमिलर फ्लूइड टू द ब्लड. जस्ट उसका कलर जो है वो येलो है. वी आर नॉट गोइंग इन डिटेल, जस्ट आपके लिए ये जानना जरूरी है. व्हाट इज लिम्फ? लिम्फ जैसे ब्लड सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में, इसी तरह से एक और फ्लूइड होता है जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है. दैट इज ऑफ येलो कलर, जो ब्लड से ही रिस करके निकल के आता है. ओके, ब्लड से ही फॉर्म होता है. ब्लड प्लाज्मा जो होता है उससे लिम्फ बनता है, एंड लिम्फेटिक सिस्टम में वो पूरा सर्कुलेट होता है जैसे ब्लड सर्कुलेट होता है पूरी बॉडी में. ओके, सो अब फूड जो है वो ब्लड में मिक्स हो गया. द नेक्स्ट स्टेप कम्स एसिमिलेशन. अब उस फूड का क्या होगा? यस, द कीवर्ड इज एनर्जी. क्या होगा उस फूड का? यस, उससे एनर्जी निकलेगी. दैट्स वाई वी आर टेकिंग द न्यूट्रिशन. हमें कोई भी एक्टिविटी, वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज करने के लिए, लाइक we are moving up the stairs, we are playing in the playground, okay, we are thinking something, learning something, writing something, or even if we are sitting on a chair for 2 to 3 hours, then the energy is used. So that energy comes from the food we take. So next step is assimilation. That absorbed food which goes into the blood, it is being utilized, right, for the energy needed for the various activities. एनर्जी डिराइव होता है उससे. नेक्स्ट कम्स इजेशन. द वर्ड इजेशन. व्हाट इज द वर्ड इजेशन एंड इंजेशन? इन मीन्स इनसाइड द बॉडी, ई मतलब आउटसाइड द बॉडी. सो इजेशन इज सिंपली द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड आउट ऑफ द बॉडी. अनडाइजेस्टेड फूड मीन्स, देखिए, सर्टेन एंजाइम्स जो होते हैं बेटा, वो ओनली सर्टेन सब्सटेंस पे ही एक्ट करते हैं और उनको कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट कर देते हैं. बट स्टिल देर आर सम सब्सटेंसेस विच आर लेफ्ट अनडाइजेस्टेड, जो डाइजेस्ट नहीं होते हैं, जिनके ऊपर कोई एंजाइम जो है एक्ट नहीं करता है. बिकॉज एंजाइम्स किसी पर्टिकुलर टाइप का एंजाइम किसी पर्टिकुलर टाइप के सब्सटेंस पर ही एक्ट करता है. सो सर्टेन एंजाइम्स एक्ट ओनली on certain type of substances.
these certain components of food which are not digested by the enzymes, किसी भी एंजाइम से जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, that will lead to the waste of the body, and that waste need to be ejected out of the body. It is to be removed out of the body. body से बाहर निकालना होता है, otherwise toxins will be there in your body. Okay, so this was all about the 5 steps in Holozoic mode of nutrition. Clear? Any doubt? Okay, so before studying these 5 steps in human beings, in complex organisms, हम क्या करेंगे, पहले हम बिल्कुल जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर ये 5 स्टेप्स को स्टडी करते हैं. ओके, सो नेक्स्ट कम्स योर न्यूट्रिशन इन अमीबा. ऑल दीज 5 स्टेप्स आर टू बी स्टडीड in case of nutrition in amoeba. So amoeba is a unicellular or multicellular organism? Tell me fast. Yes, it is a यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. इसके अंदर एक सिंगल सेल होता है, वही सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है. सारे फंक्शंस मीन्स फूड का इंटेक भी वही करता है, लोकोमोशन भी वही करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे वही जाता है, मूवमेंट करता है, एंड डाइजेशन भी वही सेल करती है, इजेशन दैट इज एक्सक्रीशन भी वही सेल के थ्रू होता है. सो किस तरह का फूड लेता है अमीबा? इट जनरली फीड्स ऑन यूनिसेल्युलर प्लांट्स और एनिमल्स. ये क्या करता है? यूनिसेल्युलर प्लांट्स और एनिमल्स को ही खाता है. सो फर्स्टली व्हाट विल हैपन, देयर आर 5 स्टेप्स: ingestion, digestion, absorption, assimilation, and then egestion. In case of amoeba has a irregular shape, right? It can change its shape according to the conditions. So firstly, what happens when the prey means shikar, when the prey is near to the body of amoeba, it makes a cup-like structure. क्या करता है? cup-like structure बना लेता है, which is called pseudopodia. It is known as pseudopodia और false feet टाइप में बना लेता है. फिट होता है ना, इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, cup-like structure. That is termed as pseudopodia is also termed as phagocytosis.